Good evening all. Welcome everyone. Good evening all. Welcome everyone. Welcome to Physics वाला OPS वाला को समस्त को स्वागत. अच्छा जमती सब ये हमें डिस्कशन करंती सब क्लास रे सेमती जो मॉर्फोलॉजी सीरीज टा चलची ठीक अछि खूब शीघ्र आउ गोटे दिटा ये रे एटा सरी जीवो. सो व्हाट आई वांटेड टू हाईलाइट दैट कि जो भी जिनस एटा चलची फ्री सीरीज ऊपर सेटा मु तुमको माने लास्ट टाइम भी कहितली काली भी कहितली कि दिस इज ओनली ओवरऑल गाइडेंस कि गोटे फ्री ऊपर केमती तमे गाइडेंस पाबे. बट एक्चुअली जदी देखिवो कि हमर जो बैचेस प्रोवाइड करा होची बैचेस जदी हम देखिवा राइट बैचेस ऊपर जदी हम देखिवा कि प्रथमे सर्व सक्षम बैच जोटा अछि दैट इज सर्व सक्षम 2.0 जोटा कि बहुत बढ़िया बैच दैट इज फाउंडेशन बैच. बेसिकली फाउंडेशन बैच रे जुआर सूर्य हाउ आर यू. तो सर्व सक्षम बैच रे प्रोवाइड इज दैट इज योर 3499 सर्व सक्षम बैच फाउंडेशन बैच रे जोतरे कि तमरो प्रीलिम्स मेंस माने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दीटा अंक रहबो एंड एटा हला फाउंडेशन बैच रे बहुत बढ़िया. इथरे तमरो जनरली स्ट्रेटजी तमरो रहे ओसीएस पय जते कहबे स्ट्रेटजी रहे तमरो प्रीलिम्स आउ मेंस ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दीटा अंक कैरी करे. ऑब्जेक्टिव माने क्लास रे तमरो ऑब्जेक्टिव भी हबो आउ सब्जेक्टिव भी फॉलो करा हबो. Then Aakrosh batch achi that is in crash course exclusively it is for the prelims right crash course 2024. Then unity integrated batch jota ki prelims au mains batch pai ठीक अछि prelims au mains batch pai this is your unity integrated batch so that is 1999. So एते सारा OCS रो batch जदी जदी हम देखिबा तीनटा चलचे and I think ता परे जदी हम देखिबा कि those who are also preparing for ASO exams this is your Anubhag batch is also there 799 and CGL pai OSSC CGL pai also 699 and Sampann RI AMIN pai 699. इत्ते सुंदर सब जाको प्रोवाइड करा होची and that to be so you know so affordable price रे definitely it will जो मन गोटे स्वप्न थाई कि नहीं we will go for a government job government servant. So definitely this revolutionary steps has been taken by the physics wala for to provide the competitive exams that can access to all for the all. आगु जीवा पुणी विषय में कहबे आहुरी बहुत सारा जिंस ता पूर्व आज हम देखिबा आज हम डिस्कस करबा गोटे लैंड फॉर्म्स ऊपर हैला. काली मु तुमको कहितले काली जेमति हम पढितले रॉक्स पढले तापर वेदरिंग एरोजन पढले आज सेमति हम करबा कि फ्लूवियल एरोजन्स हैला लैंड फॉर्म्स हैला फ्लूवियल एरोजन लैंड फॉर्म्स ऊपर फ्लूवियल एरोजन लैंड फॉर्म्स रे हम देखिबा केमति रहउची ठीक अछि. अच्छा फ्लूवियल एरोजन लैंडफॉर्म्स जदि मु देखिबी कि जेमति फ्लूवियल माने कोन रिवर फ्लूवियल मींस योर रिवर फ्लूवियल माने हला रिवर मागु बुझेबी. अच्छा सूर्य गोटे कोन क्वेश्चन पचाछि सर मु महापैक को भी बाय करियो को हेले 2-3 मंथ्स रे एक्सपायरी हे जिवो को जंती सर महापैक 1 ईयर पे वैलिड थाए. नहीं 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 एक्चुअली जदि ए जो महापैक कोन सी गोटे जिंस एथरे क्लियर सॉरी दैट कोनोसी बैच हमरो दैट इज केबे भी इत्ते कम ड्यूरेशन में बिल्कुल न थाए एटलीस्ट 1 ईयर पई थाए जोटा कि मैक्सिमम महापैक जोटा रहउची. ऑफ कोर्स तमे निजे देखो नारु ही जणा पड़ची महापैक राइट महापैक दैट इज हैला महापैक जोटा हमरो रहउची सेटा हमरो एटलीस्ट 1 ईयर रहउची हैला एई सीजीएल पई जोटा रहइबो 1 ईयर पई डेफिनेटली वैलिडिटी हैला. इवन इफ एटा भी हम तुमको कहि दउची कि जदी तमे नौचो माने किए भी जदी नौचंती ताले 1 ईयर ता बेले बेले एक्सटेंड भी हे जाय अनदर 2-3 मंथ्स राइट. सो एटा केबे भी भूल नो एटा केबे भी माने भूल मिसकंसेप्शन कि 2-3 मंथ्स रे सरी जीव हैला. फिजिक्स वाला रे ई जिंस केबे भी न थाए तो एटलीस्ट जदी तमे महारु निजे जानो महा मीन समथिंग ओके. सो 1 ईयर नेला पर भी बहुत जगह एक्सटेंशंस हे जिवो देयर इज नथिंग टू वरी फॉर दैट वन राइट. आगुर भी एमती बहुत सारा गोटे क्वेश्चंस आस्तला क्वेरीज बिल्कुल सेथरे मु कहबी कि एटा गोटे माने भूल न्यूज़ 1 ईयर नोचो दे डेफिनेटली बेडा एक्सटेंशन हे जाय. अच्छा आगु का में जिबा फ्लूवियल एरोजन फ्लूवियल माने कोन अच्छा महापैक टा देखो न सुनो एठी
एई जो जगह रे अछि हमर एठी मु लिखि दोछि ठीक अछि एठी हला तमरो ओसीएस एटा भी हला तमरो ओसीएस आउ एटा हला ओसीएस ए जो अध्ययन आरआई अमीन आउ ओडिशा असिस्टेंट एटा एएसओ पई हला एटा हला तमरो आरआई अमीन पई आउ गुटे हला तमरो एटा हला तमरो एसएससी सीजीएल ठीक अछि माने सीजीएल पई ओएसडब्ल्यूएससी तो एई जो जगह रे तमरो अछि एई जो पर्टिकुलर सीट रे एटा अवेल नै बट मु तुमको एटा कहबी कि सूर्य कि तमे पीडब्ल्यू ऐप जीवो डाउनलोड द पीडब्ल्यू ऐप मतलब कोन कहबी डाउनलोड हला डाउनलोड करिवो योर पीडब्ल्यू ऐप हला फिजिक्स वाला ऐप तमे डाउनलोड करिवो हला फिजिक्स वाला रो ओ कोथरे फिजिक्स डाउनलोड करिकि तमे मारिवो ओडिशा हला ओपीएससी मारला परे तमरो सब कोन आसीबो सब कैटेगरी पळे आसीबो को जो एग्जाम सेइथे तमरो सेटा देखेबो सेठी हला ऐप तमे आई वुड सजेस्ट सॉरी दैट यू वुड ओपन द ऐप कला परे तापर तमे ओपन कला परे तापर तमे एटा को नै परिबो आराम से हे परिबो हला ठीक अछि आप नेला परे तुमको आराम से तमे सेइथु तमे जानि परिबो तुमको देखा परिबो राइट जस्ट अ सेकंड नाउ इट्स ओके राइट ठीक अछि सो इज इट ओके सोरियम हला सेठी आप ओपन करो मु जोटा कहले आप कला परे तुमको सब जिंस तमरो मिल जिवो सेथरे हला एई स्लाइड रे नाही बट आई वुड सजेस्ट मात्र गोटे मिनिट रो काम आप डाउनलोड करिवो आप कला पर ओपीएस मारिवो सब जंग एका संगे तमरो इवन इफ तमरो आउरी भी जदी जो चॉइस दरकार सेथरे तमरो ऑप्शन एस पळे आसीबो अच्छा वर्तमान हमें देखिबा कि फ्लूवियल एरोजन साइकिल हला बिल्कुल बिल्कुल ओके सूर्या ओके वेरी गुड फ्लूवियल साइकिल एरोजन देखिबा फ्लूवियल इज एन लैंडफॉर्म्स हला फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स रे कौन देखिबा जेमती लैंडफॉर्म्स जदी हमें देखिबा लैंडफॉर्म्स जेमती वाटरफॉल गोटे हला वाटरफॉल लैंडफॉर्म देन योर रैपिड्स हला भी गॉर्ज माने गंडो जोडा कहंती हला सेमती हला बी शेप सेमती सब जगह रे कोन हुए कि नदी रो भी सेमती किछि जो भी वर्ल्ड रे हम लैंडफॉर्म्स होची ताटू सबुठु अधिका जदी लैंडफॉर्म्स हुए एई रिवर माने लैंडफॉर्म्स करंती अच्छा खाली रिवर नो रिवर संगे ग्लेशियर्स विंड ओनली नॉट द रिवर संगे क्रिएट करे लैंडफॉर्म्स has been taken place by landforms by done by your river हला river जोटा फ्लूवियल कहंती then your wind then glacier ए तीनटा माने लैंडफॉर्म्स करंते रिवर विंड आउ ग्लेशियर रिवर को कहते फ्लूवियल विंड को एओलियन एंड ग्लेशियर्स को आइस जोटा तो आज हमें 1 बाय 1 देखिबा रिवर रे हला देखिबा प्रणाम मितांजलि गॉड ब्लेस यू ओके सॉरी देखो सर आप रे देखो 31 डिसेंबर 31 25 बिल्कुल बिल्कुल ठीक अछि बहुत बढ़िया देखो एठी मु तुम कोच देखो एठी 2-3 मास सोरिया संगे संग आप रे देखि कोची सर का पाखा पखी 31 डिसेंबर 25 माने आज जदी हमें धरिबा पाखा पखी आउरी 7 मास अछि हला तो से अनुसार तुम जदी आज के डेट रे नोचो से अनुसार सेटा भी आउरी एक्सटेंशन हबो ठीक अछि सो 1 ईयर मिनिमम 1 ईयर जो दिनछ तापर सेटा एक्सटेंशन भी आउरी हेइ पार जदी तुम आज भी नोचो सेटा आउरी वर्ष पर्यंत जीवो माने आई मीन 1 ईयर 7 मंथ्स प्लस 5 मंथ्स 12 मंथ्स पाई थैंक यू वेलकम सूर्य वेलकम सो वर्तमान हमें देखिबा लैंडफॉर्म्स as we know the prime erosional agents के they are the prime erosional agents like your rivers ice हला ice wind हला को माने सब एमते लैंडफॉर्म्स करनते जेमते हमें देखिबो हला धीरे धीरे प्रथम हला तमरो रिवर जोडा की देन विंड कोटी करे डेजर्ट रे आइस कोटी करे कोल्ड और टेम्परेट रीजन्स रे wear away the rocks someone कौन erosional they wear away the rocks earth surface and transport the eroded debris to distant to low areas तो समाने सेठी एरोड करी कि ताको कोन करंती समाने ट्रांसपोर्ट कर दियंती बहुत डिस्टेंट लैंड को ठीक अछि डिस्टेंट लैंड को करी बिल्कुल बिल्कुल मितांजलि क्वेश्चन आज करिवा बिल्कुल आगे आगे पढी देबा तापर क्वेश्चन करिवा हैला क्वेश्चंस करिवा बिल्कुल ठीक अछि अच्छा
अच्छा आउ गोटे जिनस मु कहबी क्वेश्चंस जो भी जिनस एचबीबी आज मु गोटे जिनस कहबी मितांजलि इज वेरी मच क्वेश्चंस पई मु नॉर्मली देखो एगुडा हमर सब फ्री रे टेस्ट सीरीज माने फ्री रे हमर जिनस गाइडेंस गोटे समस्त को बट जदि तुम क्लास रे नौचो क्लास रे हला बाय द रीजन रिचुअल्स मींस आई मीन पढ़ा हबो तापर क्वेश्चंस करा हबो एंड इट इज एन रेगुलर हैबिट इन योर लाइव क्लासेस राइट और लाइव क्लासेस रो तो बहुत उपकारता माने आज जदि मु कहबी कि आज मेंटर इट हैज immense बहुत सारा जिनस भितर वेंटिलेट हुए एंड दैट इज एक्सचेंज ऑफ नॉलेज आल्सो हला और ये डिस्कशन नो बहुत जिनस रही सो एठी हम देखिबा जेमति हम जानली कि लैंड फॉर्म्स वे रिवर परे विंड करे एंड तापर ग्लासियर्स करे सेमती ए रिवर normally undertakes weathering erosion transportations and deposition during its course river कौन करे undertakes करे its weathering erosion transportation and deposition तार course रे हला एरोजन माने हमें जानि चंती हला वेदरिंग करिवो हला एरोज करिवो एरोड करके नै जिवो नदी बैंक रो खोली की ताडी की माटी सब नै की जिवो संगरे हला ट्रांसपोर्ट करिवो आ गोटे जगह रे डिपोजिट करिवो डिपोजिशन कोडी करे डिपोजिशन जदी हमें देखिबा लो लैंड एरिया रे हला लो लैंड एरिया रे डिपोजिट करे से रिवर लो लैंड एरिया डिपोजिट करे ठीक अछि ओके ओके मितांजलि ओके नेक्स्ट द कोर्स ऑफ ए रिवर कैन बी स्टडीड अंडर 3 हेड्स जेमती रिवर जदि हम लैंडफॉर्म्स को डिस्कस करिवा जेमती मनुष्य जीवन रे तीनटा फेज अछि है देयर आर 3 फेजेस इन ह्यूमन लाइफ देयर आर 3 फेजेस इन ह्यूमन लाइफ सेमती योर रिवर केस रे भी सेम जिंस हैला इटी कोन करिवे 3 फेजेस इन ह्यूमन लाइफ हैला 3 फेजेस इन ह्यूमन लाइफ दैट इज योर के जेमती मनुष्य रे कोन अछि जेमती योर यूथ स्टेज अच्छी 3टा स्टेज अच्छी यूथ स्टेज अच्छी आ गोटे अच्छी मैच्योर स्टेज अच्छी हैला आ थर्ड रे अच्छी तमरो दैट इज योर ओल्ड स्टेज मनुष्य जीवन रे 3टा स्टेज अच्छी यूथ मैच्योर एंड ओल्ड स्टेज सेमती सूर्या बहुत बढ़िया सूर्य लिखला कि सर मु टाइम टेबल सेट कर देछि 7 AM रे करंट अफेयर्स तापरे पेड क्लास हला एंड टिल 12 PM एंड तापरे यूट्यूब क्लास बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया हला जो माने मु एति कहबी कि सक्सेस कम टू दोज हु हैव प्लान्ड हला प्लान रे करो प्लानिंग कले सब जिंस हबो इवन इफ एठी भी मेंटर्स माने बहुत जगह से माने गाइड करिवे यू विल गेट इट टोटल पर हला नो प्रॉब्लम फॉर दैट बहुत बढ़िया आई एम रियली हैप्पी गुड इवनिंग प्रतीक्षा गुड इवनिंग सो आमे देखिबा कि मनुष्य जीवन रे जेमते 3टा फेज थाए सेमते रिवर रो भी 3टा फेज थाए गोटे हला तमरो अपर माउंटेनियस कोर्स ता माने यूथ स्टेज एटा थाए रिवर रो यूथ स्टेज हला सेमती मिडिल वैली कोर्स दैट इज कॉल्ड योर मैच्योर स्टेज मिडिल वैली दैट इज नोन एज योर मैच्योर स्टेज and third one lower plain course that is your old stage basically right hela that is your old stage तीनटा stage था youth mature and the old stage there are 3 stages in human life youth mature and old stage जेमती मनुष्य जीवन रे थाए सेमती रिवर रे भी यूथ स्टेज माने को जगह को कहबा रिवर रे यूथ स्टेज माने कोटा दैट इज योर अपर माउंटेनियस कोर्स माने गोटे रिवर जतले तमरो हला कोटु बाहरे रिवर रे तमरो बाहरे कोटु पहाड़रू हला दिस इज पहाड़रू रिवर टाइम ते बाहर दैट इज एन रिवर हला रिवर बाहरी कोटु रिवर स्ट्रीम हला रिवर स्ट्रीम एटू हेकी रिवर स्ट्रीम एटी मिसिकी रिवर इथरो फ्लो करिवो दिस इज योर अपर माउंटेनियस कोर्स एटा कहबो अपर माउंटेनियस हला माउंटेनियस कोर्स these are the small stream we can say these are the small stream right small streams of river small streams of river and it goes a big river we can say border river this is a river this is a river border river this is a long river we can say right this is a long river we can say
ठीक अच्छे ओके सो यही समय तुम निजे भाव जो रिवर जो ऊपर बाहर यू स्टेज रे कौन था एनर्जी बहुत हाई थाए है मनुष्य एनर्जी बहुत हाई थाए सेमती एक्जाक्टली रिवर रे भी एनर्जी बहुत हाई थाए है बर्तमान आम देखा अपर माउंटेनियस कोर्स अपर माउंटेनियस कोर्स रे कौन हुए है ये मुझे लिखी दूची at upper mountainous course at upper mountainous course the river the river stream has high energy ठीक है upper mountainous course ठीक है river stream has high energy हेले कौन हम तार जेहेतु बहुत अधिका तार एनर्जी अधिका तो कौन हम से समय डीप कट हम बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी दैट मीन्स और हाई वेलोसिटी ठीक अच्छे और आम कौन लिखा एनर्जी टा बहुत अधिक था माने पानी रो स्रोतटा बहुत अधिका था हाई वेलोसिटी रहिले कौन हम मन देख शुणे जिनस गोटे स्मॉल ना गाइडेंस गोटे जिनस वेलोसिटी हाई हेले कौन हम से डीप कट करियो जो भी पहाड़ आसुथुवो एटी कट करियो है सो ये कौन हम बिकॉज ऑफ हाई वेलोसिटी अगेन बिकॉज ऑफ हाई वेलोसिटी राइट बिकॉज ऑफ हाई वेलोसिटी the river stream erodes erode away the rock debris है rock debris ता संगरे ठीक है एरोड ताड़ी की नहीं जाए रिवर स्ट्रीम कौन करे इट एरोड अवे द रॉक डेब्रिस है एंड forms V-shaped valley normally V-shaped valley है आउ कौन हम नॉर्मली V-shaped valley फॉर्म करे आउ कौन करे what rapids formation करियो सब वन बाय वन सो कहबे rapid then your also waterfall ठीक अछि waterfall प्राय तो परीक्षा से क्वेश्चन पचार तो तुम ये जस्ट मुझे कही दूचे है वी सेव वैली कौन नॉर्मली रिवर करे वी सेव वैली सेमती तुम काली पढ़ो तुम आइस पढ़ो माने ग्लासियर से तुम दैट इज योर यू सेव वैली है वी सेव वैली एंड अनदर इज योर यू सेव वैली ठीक अच्छे सो बर्तमान देखो वी सेव वैली कौन वी माने वी शेप रो जस्ट लुक एट हियर किए वन बाय वन डिस्कस करियो वी सेव वैली कह जाए कि रिवर एटा एरोजन करिछि ए जो पिक्चरटा हला एटा हला तुम्हारा ग्रैंड कैनियन यूएस रो हला दिस पिक्चर बिलोंग्स टू योर ग्रैंड कैनियन गुड इवनिंग संकल्प गुड इवनिंग हला एटी तुम जो देखुछ दिस पिक्चर दिस इज योर ग्रैंड कैनियन कोठी यूएसए कि जानिछ ग्रैंड कैनियन केमे ना सुनिछ ग्रैंड कैनियन कि सुनिछि ग्रैंड कैनियन एटा देखा हो रे एठी ग्रैंड कैनियन I think it's not visible clearly. This is your Grand Canyon. ठीक अच्छे है ग्रैंड कैनियन कोठी ग्रैंड कैनियन हला तमरो यूएसए रे है को रिवर एमती करछि तमे दे एटलास देखियो एटलास में तुम कहबी है एटलास रे यूएस रे नॉर्थ अमेरिका देखियो खोलिबो नॉर्थ अमेरिका देखि तमे पाइयो दिस इज नॉर्थ अमेरिका राइट नॉर्थ अमेरिका देखुछो ग्रैंड कैनियन तमे देखो एटी दिस इज योर ग्रैंड कैनियन कोलोराडो एटी तमे देखो भला बे एई जगह रे है एरिजोना पाखरे दैट इज योर को रिवर करछि फॉर्म्ड बाय this V-shaped valley is formed by the Colorado River
हला किए फॉर्म कोची दैट इज फॉर्म्ड बाय योर कोलोराडो रिवर आकु फॉर्म कोची हला ए जो वी शेप वैली दैट इज योर वेरी गुड संकल्प कोलोराडो रिवर आकु करची कोलोराडो रिवर गोटे बहुत बड़ रिवर हला इन यूएस हला एरिजोना तो एगुड़ा तुम सब जो ओसीएस पचार तुम उठी देख यही टाइप सब सब क्वेश्चन पचार माने जो तुम गोटे जिन जानूच इफ यू नो वन थिंग देन you should go for the post-mortem माने या पर कौन हम what next हैला so जदि मु तुमको कहली वी शेप वैली हम जानले दिस इज केमती रिवर फॉर्म कला को जगह रे जंती फॉर एग्जांपल्स मु कहली ग्रैंड कैनियन इज एन एग्जांपल ऑफ वी शेप वैली एग्जांपल कहली ग्रैंड कैनियन इज एन वी शेप वैली देन वेयर इज ग्रैंड कैनियन यूएस रो को जगह रे एरिजोना स्टेट को रिवर फॉर्म करछि दैट इज कोलोराडो रिवर सो तमे एठी देखो 4-5टा क्वेश्चन डिस्कशन करले तमे पाउछ अच्छा अगेन नाउ कम बैक इफ यू लुक एट दिस पिक्चर सो व्हाट यू फाइंड हियर नॉर्मली तमे एठी देखो स्टीप साइड वॉल्स वी शेप वैली रे नॉर्मली कोन होइता है वी शेप वैली मु कहूछ वी शेप वैली रे दैट इज योर वी शेप वैली दिस इज योर वी शेप वैली रे this is your long narrow gorges है गंड जोटा कहते this is your steep walls है deep cut है steep walls due to deep cut जेहेतु रिवर बहुत डीप रे काटी था तो steep walls होता है steep walls माने बहुत धारुआ है and this is bit narrow टिके narrow है कि था oh hi Rudra how are you yes बिल्कुल related things we can say right so just look at here so here we देखले this is your V shape valley बुझी होची did you all get it this is narrow elongated deep valley हला narrow also एमाने कोन थांते narrow and high depth गहिरा थांते this is your high depth narrow and high depth ठीक अछि गोटे पॉइंट रे गला सेकंड रे steep sided walls ए पार्ट तमे पाइल ओके and this is your big height the depth टा बहुत अधिक था this is your height or depth हैला depth एटा h बुझियला is it okay बुझियला रे any questions अरे v shape वैली बुझी परछो नॉर्मल हल्का जिंस हैला if you come to जदी क्लास रे आसो then बहुत जिंसा डिटेल एठी मु तुमको गोटे ओवरऑल गोटे सरफेस आइडियाज दिया होचे these are things next मंजू पचारची सर ओसीएस फाउंडेशन बैच एंड हैला कि सर ओसीएस फाउंडेशन बैच नहीं स्टिल इट कंटिन्यूज ना फाउंडेशन एंड है नहीं तो हमरो जो सर्व सक्षम जो 2.0 अछि दैट इज आल्सो रनिंग एंड तो है नहीं रे सर्व सक्षम बैच इट इज रनिंग हैला पुनी आसीबो हैला आउ थरे मोर आसी पुनी 2.0 रे सेटा दैट इज एन साइकिल ठीक है इट इज रनिंग नो प्रॉब्लम हैला Prithis Pachachi sir is 1 year is enough to cover the whole syllabus with answer writing practice in 1 year why not Prithis definitely हैला so we can say that 1 year is also suffice तमे जदी एठी मु गोटे जिंस देखौ छु प्रीतिश रे गोटे क्वेरीज अछि प्रीतिश क्वेरीज करछि कि सर प्रीतिश हैड एन क्वेरी प्रीतिश कहछि कि सर 1 year कोन सफिशिएंट बिल्कुल मु जदी मोस्ट लाइकली कहबी कि दिस फाउंडेशन बैच जोगडा इथरे फाउंडेशन बैच रे नॉर्मली यू विल गेट तमे आंसर राइटिंग पाइबो आंसर राइटिंग संगरे तमे आल्सो जदी तमे देखिबो आंसर राइटिंग संगरे तमे ऑब्जेक्टिव संगरे आंसर राइटिंग पाइबो एंड नॉर्मली गोटे बैच तमरो 6-7 मंथ्स नहीं थे है ना तो सेथरे तमे आराम से हे परिबो देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ दैट वन राइट आराम से एनसीईआरटी पढ़ी जब तुम रिलीजियसली तुम जब फॉलो करूचो डेफिनेटली 1 year इज आराम से हे परिबो देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ दैट वन ठीक अछि एनरोल एंड हेनी इट इज रनिंग मंजू पचाची सर एनरोल एंड है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं एनरोल इज गोइंग ऑन वन कैन अवेल मो समस्त को गोटे जिंस कहबी कि पीडब्ल्यू रे तमे पीडब्ल्यू ऐप टाकू तमे डाउनलोड करो हैला पीडब्ल्यू ऐप टाकू तमे डाउनलोड द पीडब्ल्यू ऐप आकू पीडब्ल्यू ऐप को तमे डाउनलोड करो हैला डाउनलोड करिकि तमे ओसीएस ओपीएससी रे तमे जाओ ओटी ओसीएस रे सब जिंस तमे पाई परिबो
एवरीथिंग जहाँ भी जहाँ अच्छी तुम पाइपर से ठीक अच्छे गुड इवनिंग ओके this was a simultaneously optional see there are optionals are also there जोटा कि that is also running but GS ऊपर बेसी stress है ना GS ऊपर भी also stress maximum कहीं ना वर्तमान तमर जो नुआ syllabus अनुसार GS is more focus GS को बेसी focus दिया होची right आउ तापर भी ऑप्शनल भी साइमल्टेनियसली 1 ईयर तो ओनली हेची हैला जदि तुम देखियो ओसीएस रो मेन एटा को 1 ईयर इज ओनली देयर सो डेफिनेटली मच अहेड आगु बहुत सारा प्लान्स अछि ओके नो प्रॉब्लम फॉर दैट ओके थैंक यू मंजू वेलकम ठीक अछि प्रीतेश ओके सो नेक्स्ट हमें देखिबा वी से वैल्यू बुझियला प्रीतेश मंजू एवरीवन रुद्र वीसेफ वैली एटा हला जोटा कि हमें देखले कि जोटा कि वीसेफ वैली और ताकू कोनती हमते ओडिया रे हम कहबा गंड जेंति फॉर एग्जांपल काली जाई गंड हला जेंति हमर काली जाई गंड जेंति नॉर्मली हम कहबे कि हमर ओडिसा रे जदि हम देखिबी हला काली जाई तम समस्त जानिचो काली जाई चिलका रे काली जाई अछि काली जाई गंड और ताकू कोनती हला काली जाई गंड कोठी अछि इट इज डन बाय फॉर्म्ड बाय द रिवर महानदी formed by the river Mahanadi. So we take an examples one that is your Colorado River in USA which forms your that is Grand Canyon. हैला canyon और गर्ज गंड को ओडिया रे कोन कह जाय काली जाई गंड जोटा कि ताकू कह जाय गर्ज हैला इंग्लिश से ताकू कह जिवो हमरो गर्ज और canyon almost same हैला सेम जिंस माने canyon होला यूएस टर्म रे गर्ज होला ब्रिटिश टर्म रे हैला एति मन रखता सो हमें कोन देले मु दीटा जिंस एटी कंपेयर कली one river our own river that is Mahanadi that forms your Mahanadi rivers that forms your Mahanadi river forms your that is Kalijai Gonda or Kalijai Gorge and second thing Colorado river which forms Grand Canyon in US right is in the Arizona district so hame dekhile Grand Canyon versus Kalijai Gonda or Kalijai Gorge one is your formed by your Colorado river another in forms by your mighty Mahanadi river in Odisha is it clear agu jiba au semti kon e pare use pare next will come to the rapids semti kon हुए सॉरी सर फिजिक्स वाला रो पढ़े वाला स्टाइल पूरा यूनिक सबु सर बहुत भलो से पढ़ांती टेक रे किछि प्रॉब्लम हुए नहीं क्वालिटी पूरा थैंक यू सूर्या थैंक यू that is what the quality फिजिक्स वाला खाली माने पूरा ऑल इंडिया रे नो पूरा ऑल इंडिया सेम लेवल मेंटेन में क्वालिटी इज आवर प्राइम एंड एवरीवन फोकस ऑन दैट वन बिकॉज़ आज का डेट रे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बड़ा मेजर दे आर यू नो क्वालिटी ओरिएंटेड समान मोस्टली हैला ठीक है थैंक यू सोरिया सर सात कोशिया गंडे भी बिल्कुल बिल्कुल सोरिया सात कोशिया गंडे भी अछि सोरिया कहले कि सर काली जाई छडा सात कोशिया भी अछि हैला गोटे एग्जांपल में देले सात कोशिया भी महानदी भी फॉर्म करे हैला महानदी सात कोशिया हला तमर कोठी अनुगुल डिस्ट्रिक्ट रे सात कोशिया गंडे भी अछि राइट प्रीतिश पचाची सर गर्ज इज योर सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर हैला फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर तीनटा अछि जदि हम देखिबा कि हैला ऑर्डर ऊपर then it is comes to your हैला गर्ज comes to your जदि हम देखिबा that is your हैला ऑर्डर को जगह रे तीन टाइप रो अछि फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर हैला ऑप्शनल क्वेश्चन पचारछ वेरी मोस्ट वेलकम ठीक अछि एटा जदि हम देखिबा प्रथमे जदि देखिबा कि प्रथमे आसीबा कि माउंटेन फॉर्मूला तापर पुनी सेकंड रे तो मते यदि पचरे आई विल गो फॉर इट एज यू नो द मिडिल ऑफ योर सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर नॉर्मल हैला ठीक अछि फर्स्ट ऑर्डर माउंटेन वैलीज एगुडा हबे देन हमें एटा को तापर सेकंड ऑर्डर हमें नहीं परबा हैला वी कैन गो फॉर द पचारे जदि जियोलॉजिकली जदि हमें देखिबा कि सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर रो मिडिल हमें नहीं परबा और सम जियोलॉजिस्ट सेड इट एज योर सेकंड ऑर्डर सम आर सेइंग इन बिटवीन योर थर्ड ऑर्डर तो मोस्टली सेकंड ऑर्डर एटा धरा जाय राइट ठीक अछि अच्छा नेक्स्ट आसबा हमें रैपिड्स देखिबा जदि व्हेन देयर इज एन सडन जंप बड़े बड़े कौन हुए सडन जंप और फॉल इन द रिवर कोर्स सडन जंप और फॉल इन द रिवर कोर्स माने बड़े बड़े कौन हुए ए बड़े सडन जंप इन द there is sudden jump in the river course
jump or fall in the river course due to the difference in erosion, right? Due to a difference in erosion, exposure of land on the account of resistant rock rapids are formed. बेले बेले कौन हुए पाहाच बड़े थक 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 होके rapids गुड़ा था it water it jumps like this ones हला पानी इधर jump करी कैसे इटू jump करी कैसे पानी हला पानी इटू jump करी कैसे so एई जगह कौन हुए एई जो जगह तमर कौन हला एई जगह तमर erosion हला this place this is your erosion, right? Erosion happens. This is your erosion occurs, right? Erosion occurs. Then this is a jagah tomar erosion hai but a jagah dekho not eroded tame dekhibo this person is not eroded. Why not eroded kon pai because of hard rock not eroded due to hard rock hala due to hard rock जेतु गोटे hard rock थाए से जो कोन हुए erosion हेई पारेनी हला not eroded due to your hard rock ठीक अछि तो रैपिड से बड़ा फॉर्मेशन हुए पाहाच पहाड़ दिस आर सम स्टेप्स लाइक स्ट्रक्चर रैपिड्स हैला अच्छा पुणी देखिबा आ गोटे कोन लैंडफॉर्म तमे देखिलो कि योर वी शेप वैली और नॉर्मली हम देखिले वी शेप वैली और गॉर्ज और कैनियन हैला सेम जिंस रैपिड्स देखिले नाउ कम टू द वाटरफॉल मन रखो एगुडा सब कोठी these are all formed in your upper stage of river, right? Waterfall, it is an area where a flowing river drops abruptly. Waterfall normally like this one. ठीक है waterfall कौन हुए waterfall normally a river कौन करे ए टाइप रो है this is your waterfall this is your water river water this is a plank pool this is waterfall river stream river water river stream this is your river stream, right? And this is your waterfall, this is your waterfall ए जगह रहला तमरो pool it is तमको कह pool water body so जेमते हमें देखिले yes this is an plank pool or pool हमें कहबे this is an plank pool or pool we can say waterfall कौन करे river जतला height रु पड़े हला से एठी सब कौन करे एठी बहुत जगह रे तोर माने erode की one your crater type हला crater माने गोटे टिके खालुआ टाइप रो बेसी डीप नु हल्का and it forms an pool हला ताको plank pool भी कहा जाय ठीक है it also known as your pool or let's say plank pool also it is known as also your plank pool ठीक है so it कौन हुए waterfall is the flowing river drops abruptly माने पूरा तळु height रु से तळु को पड़े हला river water falls almost vertically एटी तमे नीचे देखो हला this river streams falls river stream falls हला river stream falls हला vertically at a greater height गोटे बहुत बड़ height रु से तळु को पड़े हला at a greater height generally waterfall represents major interruptions in the river flow waterfall कौन करे major interruptions in the river flow example अच्छा एटा जो हुए नॉर्मली वाटरफॉल टा कौन करे रिवर रो जो फ्लो टा को से अटकेई दिए बट आम पई एटा भलो काहे कि आमे जाऊ वाटरफॉल को जाऊ गाधे पई एंड दिस इज एन पिकनिक स्पॉट हला जनवरी डिसेंबर मास आसला माने एकदम पूरा डेक फेक बजे पूरा पिकनिक हुए ठीक है अच्छा एग्जांपल द ग्रेट नायग्रा फॉल्स इन यूएसए इट इज योर ग्रेट वाटरफॉल हैला नायग्रा फॉल्स हमर ओडिसा रे सेमती किए जानिचो any good waterfall we can name किए जानिचो any good waterfall पानी पी दवा हला ओडिसा रे जदी हमें वाटरफॉल देखबा किए कहि परिबा हमर गुड वाटरफॉल ओडिसा रे किछि अछि फेमस वाटरफॉल हां
बरहे पानी वाटरफॉल, खंडाधार हला खंडाधार वाटरफॉल, बरहे पानी वाटरफॉल, बरहे पानी वाटरफॉल, सान घागरा बड़ घागरा हला सान घागरा अच्छी केउंझर रे, सान घागरा बड़ घागरा सब अच्छी बड़ बड़ वाटरफॉल। बरहे पानी वाटरफॉल टा कोठी हला बरहे पानी वाटरफॉल दिस इज ओडिसा रे मयूरभंज रे अच्छी हला, दिस इज योर मयूरभंज रे हला, मयूरभंज रे बरहे पानी वाटरफॉल अच्छी। ठीक अछि। अच्छा एई बरहे पानी वाटरफॉल डुडुमा भी अच्छी, बरहे पानी वाटरफॉल है ना तमरो इंडिया रो सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल। ठीक अछि, बरहे पानी वाटरफॉल इज द सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल इन द इन इन इंडिया मन रख हला, हम ओडिसा रे सेटा अछि मयूरभंज रे। बिल्कुल वेरी गुड बरहे पानी हला। खंडाधार अच्छी सुंदरगढ़ केउंझर मझिरे हला, दिस इज बॉर्डरिंग योर सुंदरगढ़। ठीक अछि, सुंदरगढ़ आमे कहि परे सुंदरगढ़ आउ सान घागरा हला तमरो केउंझर। ठीक अछि, केउंझर। बरहे पानी एटम लिखि परबी द बरहे पानी वाटरफॉल, द बरहे पानी वाटरफॉल, बरहे पानी वाटरफॉल हला इन ओडिशा हमर जोटा वाटरफॉल इज द सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल, सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, सेकंड हाईएस्ट हला वाटरफॉल इन इंडिया। ठीक अछि, सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल बरहे पानी। सेमती वाटरफॉल देखले सो हम तीनटा मेजर मेजर जिंस देखले, जोटा कि जानले वी शेप गॉर्ज, वन इज योर रैपिड, वन इज योर वाटरफॉल। सो एटा हला रिवर को स्टेज रे हमें देखले, रिवर रे माने यूथ स्टेज रे माने नॉर्मली फॉर्म करन, यूथ स्टेज रे रिवर रो यूथ स्टेज रो अपर माउंटेनियस कोर्स आउ यूथ स्टेज रे। वर्तमान आसीबा यस यस बिल्कुल संकल्प आफ्टर कुंचिकल फॉल्स, सेकंड हला मिडिल वैली हला मैच्योर स्टेज, नेक्स्ट टाइम आसीबा मिडिल वैली और मैच्योर स्टेज। अच्छा एटा जो संकल्प कोची सर एटा आपनकर हला वाटरफॉल इन इंडिया सेकंड हाईएस्ट आफ्टर कहा परे हाईएस्ट किए नंबर 1 आफ्टर योर एटी मैं लिखि दोची आफ्टर नो एटी नंबर 1 रे हला सेकंड हाईएस्ट, नंबर फर्स्ट रे हला कुंचिकल वाटरफॉल इन कर्नाटका हला, कुंचिकल वाटरफॉल इज द हाईएस्ट फर्स्ट रैंक हाईएस्ट वाटरफॉल हला, फर्स्ट रैंक। ठीक अछि कोठी दिस इज इन कर्नाटका, कर्नाटक रे सेकंड हला ओडिसा। ठीक अछि, कर्नाटक रे सबुटो अधिक माने हाईएस्ट फॉल। थर्ड रे आसीबो तमरो मेघालय रे हला, सेकंड हला एटा, थर्ड रे थर्ड रैंक रे की आसीबो नामफुंक हला, नामफुंक टी चेक करनो ता ना गुडा सेटा ये रनी नामफुंक वाटरफॉल इन मेघालय। ठीक अछि, नामफुंक वाटरफॉल इन मेघालय हला, थर्ड हाईएस्ट हला, थर्ड रैंक थर्ड हाईएस्ट। ठीक अछि, जानला एटी नामफुंक मेघालय। सो नंबर 1 is in Karnataka, that is your Kunchikal waterfall, second in Barhepani waterfall in Odisha, third is in Meghalaya, that is your Namphung waterfall, right? Next सेमती हमें देखले जेमती वाटरफॉल गला हमर सरला, देन सेमती मिडिल वैली कोर्स रे भी हमरो रहे हला, मिडिल वैली आई मीन व्हाट आई मीन टू से टिके पानी पी दे जस्ट अ सेकंड। जेमती जेमती रिवर कौन हुए चेंज हुए हला यूथ स्टेज रे, सेमती मैच्योर स्टेज मिडिल वैली कोर्स, दैट इज योर मैच्योर स्टेज हला, दिस इज योर मैच्योर स्टेज राइट। ए कोर्स रे कौन हुए ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ ए रिवर द लैटरल एरोजन रिप्लेसेस द वर्टिकल एरोजन। जनरली कौन हुए जो वर्टिकल एरोजन था दैट योर लैटरल एरोजन दैट रिप्लेसेस योर vertical erosion, right? Lateral erosion replaces your vertical erosion and the speed of the river reduces. Normally कौन हुए
the speed of the river reduces. तमर जो एठी कोन होतला नदी रे यू स्टेज रे वी शेप थिला ठीक अछि माने कोन हो वर्टिकल एरोजन एठी रे कोन होतला एठी एठी रहइबो कोन कि वैली वाइडनिंग हो एम्ति टाइप रो रहिजो दिस इज योर ए टाइप रो रहइबो वैली वाइडनिंग आई मीन ए टाइप ला वी न होई कि इट इज लाइक दिस वन समटाइम्स सो एठी कोन रहइबो योर दिस इज योर वर्टिकल एरोजन मोर एठी रहइबो vertical erosion more हला more vertical erosion depth cut एटी lateral erosion more एटी को रखियो कोन lateral erosion more हला lateral erosion more ले कोन हो valley टा wide हिजो माने depth टा अधिका बॉडी बॉडी depth is widening so speed of the river reduces river speed टा काहे को reduce करियो and the characteristic turns to river called that is your meanders river meanders माने river टाइम ते अंका बंका एमती हे कि जो meandering river this is a prominent features that river acquires in this stage वर्तमान जानिबा कोन पई हुए white looks this is called your river meandering हैला this is called your river meandering माने तो देखो river टा अंका बंका हे कि जाउछ this looks like the river looks like an river meanders कोन पई हुए why the river meanders is there river meanders due to जेहेतु अपर स्टेज रे रिवर कोन करता है ता संगरे मेचे गुडा माने boulders debris it comes with its flow right your rock boulders normally rock boulders नहीं क्या आस्ता बड़ rock boulder हला rock boulder आउ various types of rock boulder पर जदि हम देखिबा कि cobbles pebbles बहुत ता संगरे नहीं क्या आस्ता आउ ताकू डिपॉजिट करे so what happens से दल नहीं क्या आसे से आउ तार स्पीड टा कमी जाय तुम निजे भाबो तमे नॉर्मली किछि तमे नै नो लोड हला you do not have any load with you तमे नॉर्मली एमती चलछो तम स्पीड टा बढ़िवो ना 50 केजी हला 50 केजी बैग रे गोटे तमे धरिछो तमे दौड़ियो कोटा रहइबो स्पीड टा कोथरे हबो स्पीड टा हबो जोटा लोड नाही exactly this happens river संगरे भी same things happens होछ river जतले लोड नै के हछि संगरे तारा स्पीड टा रिड्यूस करि जाउछ हला the speed of the river has been reduced when it comes possess your much debris with it speed अधिक हबो बिल्कुल हला लोड नथिले तमर स्पीड टा अधिक हबो सो ए जगह कोन हो river meandering happens हला तो हम लिखि परिया the river हला the river meanders हला meanders माने अंका बंका है कि चलियो दिस इज अंका बंका एमते river meanders due to carrying of heavy loads माने कौन हबो rock debris loads माने किए rock debris हैला rock debris with it heavy loads rock debris with it निजो संगरे river river possess maximum rock debris with it that is why river बिल्कुल रिवर कौन करे जदि देखिबो कि ता संगरे रिवर डेब्रिस फॉर्मेशन हुए रिवर डेब्रिस संगरे से जुगु सेटा द स्पीड and hence सेटा हम लिखि परिबा and hence the speed of the river and hence the speed of the river ठीक है speed of the river reduces ठीक है speed of the river reduces देख परिबाटी on the normal course the river deposits muds and other एति बुझेला meandering so जेहेतु ता संगे से बेसी लोड होची ताले तार स्पीड टा कमी जिवो हैला again तापर कोन हो on the normal course the river deposits muds and other material on its bank हैला निजो बैंक रे others on its bank which act as embankments of the river called levees ए केस रे कोन हुए मिडिल स्टेज रे आ गुटे इंपोर्टेंट जिंसटा रहे दैट इज संकल्प देखला फास्ट केस रे अच्छा ओके बिल्कुल फास्ट केस रे तले तम पाखरे लोड कम थिबो बिल्कुल अधिक स्पीड ता माने हम कोन जानले कि यू स्टेज रे रिवर एक्वायर्ड योर हाई वेलोसिटी सिंस इट डजंट हैव दीटा जिंस
इट डजंट हैव एनी लोड से समय रिवर टा कोन करता एरोजन बहुत अधिका थाए डेप्थ कट डीप कट करे हला बट मिडिल स्टेज रे जिनसरा उल्टा हो माने टिके ये ही जाए रिवर ता संगे एरोजन टा ता संगे कोन करे नै की जाए माने से ओजन गडा ओ से संगे नै की जाए तो ता स्पीड टा रिड्यूस करी जाए सेठी कोन थाए योर वेलोसिटी इज हाई वर्टिकल वेलोसिटी इज वेरी हाई वर्टिकल सो नॉर्मली कोन हुए सो ई जगह रे लेवीज फॉर्मेशन हुए हला बैंक्स एंड एम्बैंकमेंट्स ऑफ द रिवर कॉल्ड योर लेवीज कोन होबो हला लेवीज एटम कहूची जितेबाला रिवर सांगे कौन हुए नदी बंधरे है रिवर रे ये कर दो गोटे डायग्राम रे ये तुम आहरी नदी बंधर बेले बेले देखा जाए है व्हेन यू नो नेचुरल एम्बैंकमेंट्स एटी एमती थिबो रिवर बंध है नेचुरल एटी तुम पानी रहिला यू नो वाटर फ्लो रिवर वाटर फ्लो करछि रिवर वाटर फ्लो ठीक है रिवर वाटर फ्लो दिस इज योर लेवीज बेले बेले क्रिएट होता दिस आर द लेवीज these are the levees these are the levees has been created these are called your levees so levees normally levees are nothing but levees are formed due to levees are formed due to deposition of due to the sediments deposition of sediments at the along the embankment at the embankments embankments रे जतले तमर जमा करिवो हला सॉरी this is the deposition of sediments at the embankments है एम्बैकमेंट साइड रे से जमा कर एम्बैकमेंट कोटा है बंध ओडिया रे हमें को नदी बंध यस वेरी गुड मंजू कहला सॉरी मितांजलि कहला सर इट यूज फॉर द प्रिवेंट फ्लड बेसिकली लेवीज आर प्रूव टू बी कोन हुए ए जो लेवीज मानकर ए माने कोन करंती गां रे दे आर द नेचुरल वॉल और बफर वॉल व्हाटएवर नेचुरल वॉल लेती लिखबा सिंपल वर्ड रे नेचुरल wall that protects village from flooding natural wall बड़ बड़ wall है wall तैयारी होता है जोटा कि प्रोटेक्ट करे कौन फ्रॉम फ्लडिंग फ्लड वाटर जो आसे फ्लड वाटर को से रोके naturally it है ना naturally से ताको प्रोटेक्ट करे it protects the river water from the flooding तो देखते बड़ बड़ wall सो हमन कोन जाने levees are the natural creator और से माने they protect the your village natural wall तक हम कह परिबा हैला natural wall we can say they are the natural wall so it हमें जानले meanders then levees then next come to the your lower plain हैला lower plain लास्ट इज ये जो देखिबो हैला तो हमें देखिले कि वन बाय वन हमें क्रॉस करले कि सॉरी एडी हमें देखिले कोन अपर माउंटेनियस कोर्स हल्ला यूथ स्टेज रे मैच्योर स्टेज हला तमरो दैट इज योर मिडिल वैली कोर्स हला एंड देन असला लोअर प्लेन कोर्स और द ओल्ड स्टेज तमे निजे भाबो कि ओल्ड स्टेज रे बहुत ताकत माने आई मीन सॉरी यूथ स्टेज रे बहुत ताकत तमे बेले बेले देखिबो कि यूथ स्टेज रे वेलोसिटी वेरी हाई तमे जत्ते मेंचे खाओ भी डाइजेशन हो तो सेमते रिवर संगे भी सेम दिन होय मैच्योर स्टेज रे धीरे धीरे स्पीड कमे मनुष्यर देन लोअर प्लेन रे हैला लोअर प्लेन रे ऑलमोस्ट वेलोसिटी बहुत कमी जाय माने आई मीन your the velocity or the you know the energy of the river reduce in the monitor energy in the बुढ़ा पर कमी जाए समथिंग that is what it the you know the energy level or lower planes रे कमी जाए ठीक अछि so समथिंग exactly here we can say lower stage or old stage we can say river रो जमती old stage of a river ठीक अछि so during the lower course the meandering activity of the river is most prominent देखो
बेले बेले क्वेश्चन तुमको पचारती meandering activity तुम एक्चुअली जदि देखिबो मोस्ट प्रोमिनेंट हुए कोठी लोअर कोर्स किंतु आरंभ होता कोठी मिडिल स्टेज है। सो आम जानले कौन कि मोस्ट प्रोमिनेंट रिवर पोजेस मच लो एनर्जी यही समय कौन करता है कि रिवर ता संगे मेंचाई सेडिमेंट सब आनी जमा करता है। सो रिवर द एनर्जी ऑफ द योर है रिवर पोजेस मच लो एनर्जी एंड इट आ गुड लिख परिबा द वेलोसिटी ऑफ रिवर है द वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज है इज very is very low है रिवर वेलोसिटी भी बहुत कम था वेरी लो वेलोसिटी रिवर। अच्छा यही समय कौन कौन हुए राइट है रिवर कौन करे नॉर्मली द बिकॉज ऑफ दिस ड्यू टू दिस बिकॉज ऑफ दिस रिवर एंगेज इन रिवर कौन करे एंगेज इन डिपोजिशन से कौन करे डिपोजिशंस मैक्सिमम अधिक करे रिवर एंगेज इन डिपोजिशन सम ऑफ द प्रोमिनेंट फीचर्स राइट। अच्छा ब्रेक ओके ठीक है पानी पी दो ओके थैंक यू मंजू। रिवर कौन करे डिपोजिशन करे है। सो कौन हुए जमती तुम देख लो कि सब जगह डिफरेंट डिफरेंट जियोमोर्फोलॉजिकल फीचर्स होचे सेमती एई जगह कौन हबो ऑक्सबो लेक हुए। सो दिस इज लुक एट हियर ऑक्सबो लेक कौन करे ए जो मियांडरिंग एक्टिविटी तमर होतला मियांडरिंग एक्टिविटी लाइक दिस वंस एई जगह कौन हबो डिपोजिशन एते अधिक हबो कि कौन हबो त लूप गोटे लूप फॉर्मेशन हबो दैट इज कॉल्ड नेक्रो लूप एटा कटि जिवो एमती हैला एटी जगह कटि जिवो कटि कि कौन हबो गोटे लेक टाइप रो फॉर्मेशन हबो दैट इज कॉल्ड योर ऑक्सबो लेक दिस फॉर्म्स योर ऑक्सबो लेक राइट। सो नॉर्मली एटी कौन देखले समटाइम्स द रिवर टेक्स ए कंप्लीट सर्कल बेले बेले कौन हुए इट कम्स ए कंप्लीट सर्कल Sir, I am Sachi from Mains Batch. Do you still remember? Yes, Sachi. Hello, how are you, Sachi? Yes, I still remember. Okay, how was your mains? Mains kemti dela? Sachi, mains kemti dela tora? How did you perform in mains? Kemti mains jaichi? Yes, Sankalp Mitanjali. Yes, it is an Ansupa lake. Hela takes a complete circle part of main tract. Eventually, the river cuts through the narrow neck, forming a call that is called Oxbow Lake. So ऑक्सबो लेक रो एग्जांपल हमर केमति देबा ऑक्सबो लेक रो एग्जांपल हम देले किए हमर इट देबा ऑक्सबो लेक रो एग्जांपल दैट इज योर अंशुपा लेक राइट अंशुपा लेक जोटा हला तमरो एग्जांपल ऑफ योर ऑक्सबो लेक। सच्ची भल लिखिछो बहुत बढ़िया सो आई एम एक्सपेक्टिंग बहुत बढ़िया सच्ची आंसर तो मेंस बैच रो बहुत बढ़िया परफॉर्म लिखुतलो बहुत बढ़िया आई एम रियली हैप्पी I'm sure you'll bell the cat this time, right? बहुत बढ़िया, right? So this is your Ansupa Lake, right? Ansupa Lake, this one, है Ansupa Lake. So Ansupa Lake हमारे कोटी, we can say where is Ansupa Lake? Ansupa Lake कोटे example है example of example किए Ansupa Lake. Ansupa Lake टा कोटी को river एटा परीक्षा रे पक्के prelims रे पक्के कोटी अंशुपा लेक जदि हमें देखिबा इट इज बाय महानदी रिवर ऑन महानदी रिवर हला दिस इज योर महानदी रिवर अंशुपा लेक और रही कोटी इट इज इन द आठगढ़ हला कटक डिस्ट्रिक्ट रो आठगढ़ ब्लॉक आठगढ़ रे अछि अंशुपा हला अंशुपा अछि सेकंड के देखिबा सेकंड रा में देखिबा सेम थी कन्वर झील देबी कन्वर झील राइट कन्वर झील कोटी हला कन्वर झील हला तमरा कौ रिवर ऊपर हला कन्वर झील बिहार रे हला गंगा कन्वर झील हला गंगा इन बिहार कन्वर झील हला बिहार गंगा रे कन्वर झील हला तमरा बिहार रे कन्वर झील
गंगा रे उलार लेक बिल्कुल उलार लेक भी ठीक अच्छे है ठीक अच्छे सो दिस इज ऑल अबाउट आउ कौन करे रिवर रिवर आ परे भी खाली ऑक्सबो लेक नो ऑक्सबो लेक परे भी रिवर फॉर्मेशन आउ कौन करे रिवर आल्सो डेल्टा फॉर्मेशन करे हैला एटी मु कोन लिखली डेल्टा फॉर्मेशन डेल्टा हैला डेल्टा फॉर्मेशन ठीक है जी at lower phase at old stage हैला एटी लिखबी at old stage a river हैला deposits the alluvial sediments हैला the alluvial sediments at lower course at lower plane हैला alluvial sediments at lower plane हैला or lower course ठीक है the river deposits lower plane or lower course alluvial sediments हैला and thus form हैला delta and thus formed delta हैला example किए delta रो जेमते हम कहबा हैला जेमती your महानदी डेल्टा हैला कटक ठीक अछि महानदी डेल्टा फॉर्मेशन करछि महानदी डेल्टा फॉर्मेशन करछि at कटक ठीक अछि मेनी महानदी डेल्टा कटक रे डेल्टा ओके करछि गोदावरी डेल्टा हैला गोदावरी डेल्टा फॉर्मेशन करछि हैला राजमुंड्री पखरे देयर गोदावरी डेल्टा ठीक अछि दैट इज फॉर्मेशन मेनी एरियाज रे गोदावरी राजमुंड्री पखरे हैला गोदावरी डेल्टा ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट रे हैला ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश हैला गंगा डेल्टा प्रयागराज दे आर द एग्जांपल्स ठीक अछि वर्तमान दिटा क्वेश्चन करिवा सो इठु हम जानले वी हैव कवर्ड वर्तमान हम जानले इटी कवर करले कि रिवर अपर यूथ स्टेज हम कवर करले द यूथ स्टेज ऑफ ए रिवर देन योर मिडिल देन लोअर प्लेन कोर्स रे कोन हबो ओल्ड हला तमरो ओल्ड स्टेज हला तमरो लोअर प्लेन कोर्स रे मैच्योर हला मिडिल वैली रे यूथ हला तमरो अपर माउंटेनियस स्टेज राइट पिलान के डिमांड अछि सर आगुडे काई लिखिलेनी हला लिखि इटी गोदावरी गोटे एग्जांपल देली एग्जांपल 1 हला एग्जांपल 2 एग्जांपल 3 रे देबा गंगा डेल्टा हला गंगा डेल्टा कोडी करछि गंगा डेल्टा एट हला ठीक अछि गंगा डेल्टा कोडी करछि तमरो योर कोलकाता रे हम कहि परिबी ठीक अछि कोलकाता रे गंगा डेल्टा भी करछि क्वेश्चन करिवा ओके बुझियला समस्त को हला दीटा क्वेश्चंस करिवा कर प्रथम एग्जामिन the following statements and choose the correct option given below just a second number 1 running water is far most important agent of erosion then other agents of erosion like glacier wind groundwater are locally dominant which one is correct only one only two both 1 and 2 neither 1 neither 2 well running water is by far the most important agent of erosion समस्ते प्राय तो समस्ते सी को चीज करछो देखिबा वन बाय वन रनिंग वाटर इज बाय फॉर द मोस्ट इंपोर्टेंट एजेंट ऑफ एरोजन बिल्कुल ठीक एटा एकदम ठीक आंसर देन अदर एजेंट्स काई के एरोजन हमें खाली कहितरे खाली रनिंग वाटर नो ग्लासियर भी माने आइस ग्लासियर्स भी विंड भी और ग्राउंड वाटर आल्सो द लोकली डोमिनेंट बिल्कुल एब्सोल्युटली
देखो रिवर टा मैक्सिमम जगह कवर करे बट ग्लासियर्स हला गोटे लोकल डोमिनेंट एरिया ग्लासियर्स माने हाई लैटिट्यूड कंट्रीज रे विंड हला डेजर्ट रे ग्राउंड वाटर हला तमरो हला लोकली डोमिनेंट सो हेंस बोथ आर करेक्ट आंसर इज सी ओके वेरी नाइस बहुत बढ़िया आंसर देन सेकंड क्वेश्चन करो थैंक यू सर हला सेकंड क्वेश्चन करो मैच द फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स एंड डिफरेंट की लैंडफॉर्म्स विथ द एक्शन ऑफ डिफरेंट एक्सोजेनेटिक फोर्सेस कोठी हला ठीक अछि एटा हला तुम लास्ट क्वेश्चन लेगून्स नेचुरल लेवी सिंकहोल्स स्टैंड्स कोन रहइबो चूज करो संकल्प कलो 1 3 4 2 ओके लेगून्स हमें देखियो हला नेचुरल लेवी ने पड़लो और टिके पूर्व नेचुरल लेवी पड़लो बी नेचुरल लेवी कोठी कहलो सिंपल वेरी सिंपल केमते नेचुरल लेवी तुम सिंपल देखिलो बी हला 3 नॉर्मली बी टा हला 3 रे तुम 8 बी 3 माने कोठी ए दीटा करलो ए गोटे ऑप्शन ए दीटा ए आउ डी काटिलो सेमती लेगून्स हला कोठी ओशियन वेव्स बिल्कुल ए 1 1 ये भी ठीक रहला 1 और 1 ये भी हला देन सिंक होल्स बेसिकली तुम कोठी देखा जाए ग्राउंड वाटर रे और टार्न हला तुम ग्लासियर्स रे 2 और ये हला 4 सो आंसर जदी देखिबो 1 3 4 2 दैट इज योर बी फॉर बॉम्बे ए जो दीटा जिंस रहला सिंक होल जो माने कोठी देखा जाए सिंक होल बेसिकली तुम देखा जाए लाइमस्टोन रीजन रे हला सेटा तुम आगु कहबी टार्न हला ग्लासियर रो जोटे काले हमें हला आ भितरे परे ग्लासियर्स और तुमरो और रहला एओलियन ए दीटा हमें कवर कर ठीक अछि हला क्वेश्चन प्रैक्टिस हला एमती करबा पुनी काली हमर देखा हबो हला काली पुनी हमें नुवा गोटे टॉपिक लैंड फॉर्म्स रे काली म आसीबी आज रिवर आई होप रिवर लैंड फॉर्म समस्त को बुझा पड़ला ठीक अछि एनी क्वेश्चंस बिफोर दैट वन थैंक यू सो मच थैंक यू यस वेरी गुड संकल्प वेरी गुड थैंक यू सो मच एवरीवन थैंक यू फॉर द स्टेइंग विथ मी हला पेशेंस रे पढ़लो बहुत सुंदर भाव पढ़ुछ पचारुछ आई एम सो हैप्पी फॉर दैट वन आ मन रखो दीज आर ऑल अगेन आई एम सेइंग दीज आर ऑल जो भी हमरो रोची ओसीएस रो फाउंडेशन बैच हो प्रीलिम्स रो हो हला सब जानको डेफिनेटली इट विल हेल्पफुल फॉर एवरीवन हला जो भी बैच तमे जॉइन करिया को चाहूछ हला ओसीएस रेडी सर्व सक्षम हो कि आक्रोश हो कि यूनिट इंडिकेटर बस अगर सर्व सक्षम बैच फाउंडेशन बैच इज एन गुड वन वर्तमान पे प्रीलिम्स पे आक्रोश आसी और यूनिट इंडिकेटर बाकी तुम्हारे एसओ पई तुम्हारा अनुभाग हो संपन्न AMIN हो के और महापैक 8 पे हो ठीक अछि सो दिस इज डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट ऑल ओके थैंक यू सो मच थैंक यू एवरीवन we'll meet again tomorrow good night thank you so much jai jagannath thank you good night all thank you so much thank you